Hey, hello, welcome to the stream. But I have a serious thing to talk about today. Honest talk, this is going to be. मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? How long it will take? This is a dead serious talk. Viewer to viewer. This is viewer to viewer talk because I'm also a viewer of my channel. So basically, I'm a viewer and I'm talking to a viewer, a potential viewer who might view this because no one is right now. Something saying कि ऐसा कब तक चलता रहेगा. I'm talking about time. ये time कब तक चलता रहेगा? This is a existential question. So answer seriously and be careful. Why be careful? Because it is about time and that includes your time as well. So ऐसा कब तक चलता रहेगा कि this existence away. Can you listen to me or not? Because I am in this recording, I don't know. I think you can. I have to check. I have to break my character. Sorry. Actually, it's a monotonous character, so it doesn't matter. Fuck it. Fuck the character. Actually, I'm not like this in real life, and I don't say that much actually as well. Where's my phone now? 8% charge battery. I've done so many mistakes that it can get charged up by just my mistakes. So there's some use of it. That's the use to charge my phone. I cannot watch. Always I have to search. Okay. There's some use of it. Wait. Can you listen to me? We have chat. One guy. Hello. Bro boy, what should I do now? Because my computer, my laptop was on other Wi-Fi which isn't stable. That Wi-Fi isn't stable. That's why I was lagging. So what should I do? Should I start a new stream or continue on this one? I think now it should be fine. I cannot watch. Start a new stream or continue on this one. Now it will echo as well. Continue. We got the response that we should continue. Okay, well, we are gonna continue. Fuck that intro. It doesn't matter. That intro was set. But to give you some context, I have exam on 6th. My cat management exam. शॉर्ट वाली स्ट्रीम करा करो आपकी वॉचिंग बढ़ेगी.
No, quite the opposite. अच्छा, shorts वाली. I had done it few times and my watching did increase. It went up to like 10, 7 to 10 की watching. But content is more valuable for me than watching. It doesn't matter. I'm going to continue on this because quality on short stream, there is no quality. You cannot do stuff which you can do over here, and wa- they can also scroll. So you get few viewers here and then they're going to scroll, move on to the next stream, and they are basically not your loyal viewers. I want to gain an audience. Now I've decided कि fuck short stream. People will come to me. I'm not going to go to people. मैं लास्ट आपको जिसका चैनल बता रहा था उसने मेरी टिप्स मानी और उसके व्यूज़ बढ़ने शुरू हो गए. Okay, now I'm not doing it for views. I'm now liberated. You cannot see hello over my face, but now मैं अब दूर जा चुका हूँ इन सब से. Now I'm firm believer of Niskam Karm, a karm which is free of attachments, free of your ego, a karm where you dissolve your ego and you just do it for sake of it. And what we're gonna do today for sake of it is to solve maths problems. I'm quite weak at maths. I was good in schools, and my report card used to tell that I was good, but I was actually not good. Maths is, I think, your brain structure plays a big part in maths. When you do a lot of problems, your neural connections connect in a certain way that you're able to do that. Mathematicians' neural networks, neurons, are different from others. They basically have formed that connection. So I need to solve problems. I have exam on 6, so I have second attempt. Like this is going to be my first attempt, but this time I don't think I'll get enough marks. So I'm going to just check for first attempt what's the exam like, and I'll do my best on second attempt, which will come in February. I'll start preparing from now. And the thing is that we can do these topics in 3 days. That's what I had done. I'd planned a video where I'll do these 3 topics and basically journal them, my process and how it went. Basically a documentation type that, oh, in this many hours I did this and this was my experience, and it will come out as a video, which I am doing. But next, let's start our topics. What should I do? Like, there are plenty of it. There is number system, which we can do. There is probability. I've done time and work, ratio and proportion, percentage, and average. I'm not sure if I don't have confidence in them that I'm totally good.
but I've done few problems. Let's see. So we can do probability. It's an easy topic, and then we can also do profit and loss. So these two topics we can solve questions of. I'll read your super chat. I mean, always say super chats when I don't have that feature enabled on my channel is only. So trigonometry is a big thing. Trigonometry. So basically we have geometry. Trigonometry is part of geometry. Pie charts, we can do those later. So now, for now, profit and loss and probability. Also, after that we can do number system. I don't think I will have enough time. Let's go. But let's read your chat first. We have 3K watching. And am I the one watching? So, do we have 2K watching or 3K watching? मैं लास्ट आपको जिसका चैनल बताया था बढ़ने लगे थे. ओके, आपकी बात सुन के लगता है आप डॉक्टर हो. ऐसा आपको इसलिए लगता है कि आप डॉक्टर हो, जय दवे जी. दैट्स वाई यू फील कि मेरी बात डॉक्टर जैसी लगती है. और is it the other way कि you are also not a doctor, I am also not a doctor. Basically dentists are not doctor. Today I am in the mood of being honest, so that's why non-doctor is attracting non-doctor, and you're feeling I am doctor because you want to make yourself feel better. That could be case as well. Let's do whole number first. What's there to do in whole numbers? चलो मैं चलता हूँ. अच्छा, you're pro but you're going. Wow. I think, what's your age first? You're pro boy. You should do maths, okay? Now I'm scolding you like a teacher. You should do maths. Let's do whole number. I know whole numbers. It's 0 plus natural numbers. Okay. You have to type something, chat. I cannot go on speaking for hours and hours. When I'm expecting something from you, you should chat. Also, this is much better. Dentists are not the doctor, ये याद रखूँगा मैं. आई थिंक ये चीज़ जो है मैंने फ्लो में बोल दी थी. आई एम नॉट सीरियस. मतलब देयर इज़ अ डिबेट अबाउट इट. यू कैन फाइट ओवर इंटरनेट, आई डोंट नो. नॉट ओके. पोकेमॉन लाइव. आप बीच में आके कुछ भी टाइप कैसे कर सकते हो? नॉट ओके. व्हाट डू यू मीन बाय नॉट ओके? डू यू मीन बाय दैट कि मी कॉलिंग dentist as me counting dentist as not doctor is not okay? And our stream has taken a new turn. We were here to do maths, and we are gonna continue on that path. I'm gonna do probability. What's the probability of joy? Okay. अरे घर वाले मुझे पीट देंगे लेट सोऊंगा तो. I think that's not the case. You're pro boy. I think you hate maths. That is the case. Don't try to dodge that thing that घर वाले पीटेंगे और ये सब. पोकर पॉन भाई कैसे हो? आपने ही तो बोला कुछ लिखने को. Yeah, I feel you. I think sorry. But write something more, like write something meaningful. It's not like hello, hi, bye bye. Hello, hi, bye bye. We are not doing hello, hi, bye bye.
आई थिंक बढ़िया है प्रो बॉय. अपना बताओ क्या हाल है. We are not doing this shallow streams. We are doing deep streams. Now I can connect to you more. I think what we need is connection, but I think for a better connection, we need more people. That's what we are lacking. Thing is, ki in three people, if we do a better connection, that's called threesome. And we are not here to do threesome. I think we need more people. Less number of people is also a problem. But moving on to probability, मैं तो अच्छा नहीं हूँ पोकर पॉन भाई. ऐसा कोई नहीं लिखता कि मैं अच्छा नहीं हूँ पोकर पॉन भाई. ऐसा कौन लिखता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ. Okay, but still I mean, we're not doing. I said earlier also that we're not doing shallow streams, we're doing deep streams. So do deep talks, and we avoid questions, and we, whenever someone asks you are you good or not, you say yeah I'm good, bye bye, see you. And then the main crux of conversations doesn't happen. So you should say I'm not good. People will the person will ask why you're not good, and then you'll tell him whole story. It's another case if the other person is ready to listen to you or not. क्या हो गया प्रो बॉय. एंड पोकर पॉन लाइव इज़ काइंड इनफ टू आस्क कि क्या हो गया. But some person might not even ask कि क्या हो गया. He might move on saying okay you're not good, bye bye, I'm good. मुझे बुखार है 103 आज. अरीना में गया हार के आ गया. फोर्थ पोजीशन आई. फोर्थ पोजीशन इज गुड टू. यू शुड बी पॉजिटिव लाइक पोकर पॉन. मूविंग ऑन टू प्रोबेबिलिटी. वेयर कैन आई डू प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस. Jay, where are you? You shouldn't take things like this seriously. You'll encounter people like me in the future as well. So you shouldn't take such things seriously. Probability of her sending the stream without solving maths problem. You know the answer. Thanks for reminding me. We're going to solve it. Let's put on some music. Wait. Where is the screen capture? Now, I think it is here. Now I can do screen capture. अगर मैं खुल के बात करूँगा तो स्ट्रीम एंड करने की नौबत आ जाएगी. कीजिए आप चैट. आई एम नॉट लायबल फॉर माई चैट, सो इट डजेंट मैटर. You do whatever you do, whatever you want. It'll be more entertaining for other persons and me. But seriously, Jay, since you would have taken this NEET test, you would know better that where can I get question banks of topics. सर्च हिस्ट्री दिखाओ. पोकर पॉन भाई आप नकुल भाई की लाइव में जाते नहीं. एंड नाउ आई रियलाइज कि आई डोंट हैव इवन वन ऑडियंस. This pro boy goes to everyone's live stream. Poker Pawn is a streamer. Jai, thanks for again reminding. But Poker Pawn is streamer. Jai is my friend, so I don't have
any audience. ProBoy goes to everyone's live stream and PokerPon also goes to everyone's live stream. So they are not my distinctive viewers. So I'm the only one who views myself. Wow, what a Kalyug hai, core Kalyug. I'm a math honors student, so you can teach me better. PokerPon, can you come to Discord? But only say yes if you know better. Like गप्पे नहीं मारने, सच में मैच करनी है. फिर मैंने आपको अविनाश भाई के लाइव में देखा है और शायद आफिद भाई. देखो अगेन प्रो बॉय गोज टू एवरीवन्स लाइव स्ट्रीम. Hence proven. Hence proven is also a valuable term in maths. So we learned hence proven here. अरे I meant के किसकी question bank चाहिए? Probability की. For now probability, but we might require many more as we progress. But for now, let's do probability question. मैं सभी को सपोर्ट करता हूँ. I have to support my phone right now. How to charge my phone? Otherwise, it will be dead. Like you are pro boy from inside. Then no, I am way too exhausted to do classes of or even speak. I didn't expect कि this guy will reject me for a maths class. There are many apps and sites for it. Okay. But I had expected better rejections in my life. But this type of rejection makes me feel dumb. Fine. Or you can go for 10th standard question bank. Okay, starting. Now starting. भाई यार शादी अटेंड करके आया हूँ अभी. कल करेंगे पढ़ाई. शादी या कितनी शादियाँ हो गई. मैं तो हम सब एक दूसरे को रोस्ट करते हैं. कर ही तो रहे और कितना रोस्ट करेंगे. Solved questions and answer. Probability of an event I know from my class. Event depends on number of favorable outcomes upon total possible outcomes. Good idea, pro boy. Measures how likely an event is to occur expressed as a value between 0 to 1. You have to remember that it's value between 0 to 1, which can also be expressed as fraction. Fine. Probability questions and answer provided below for you to learn and practice. Question 1. I would prefer cat questions. Probability cat questions. मैं अपने कुछ भाइयों को लाइव में बुलाऊं? हाँ बिल्कुल बुलाइए. It'll be a good thing to do, I think. आपको उसके लिए बहुत पुण्य मिलेगा. Promotion of Axis Bank is going on. Fuck. I have to use Brave.
CAT probability and combinatorics questions for PDF with live solutions. Okay. Basics of if the probability of an event occurring is P, then the probability that the event will occur R times in n trials is given by what the fuck? I thought we had only one formula in probability. What the fuck is this? That the probability that the event will occur R times in n trials is given by. So now we added one more variable into probability, which is how many times it will occur. What is your branch, by the way? If you're asking me, I'm political. I'm arts, means humanities, political science. If P is the probability of an event, then odds in favor of an event are conversely the odds against P are 1 minus P by P. Just written in complicated language. This is simple. Will occur R times in n trials is given by what is C here? N C R P R n 1 minus P n minus R. I was an idiot that I thought I can study on stream. Basics to encounter CAT level, or more specifically my CAT level questions. Or do you know about permutations and combination? I don't. Basic terms must be crystal clear. Sample space, event. I know itna. Sample space, all possible outcomes. Okay, all possible outcomes. Sample space. Complement rule, super useful in at least one none not happening except type questions appear. P not A. Okay, so probability of A not happening is 1 minus probability of A. Simple, fine. Addison rule. Mutually exclusive events cannot happen together. Mutually inclusive events means event which can happen together. Even if A exists, B can also exist. Mutually exclusive events is that if A exists, B cannot exist. So, but probability of A, what is the sign? P is equal to probability of A plus probability of B. What is the sign? आ रहे हैं बट कोई तो चला गया. Now I can only see watching of one. A union B. Okay, fine. So A plus B. Not mutually exclusive. Let me be first clear on mutually exclusive.
unable both to exist or be the case at the same time. Fine, I was right. But now, why is it Eddie's? Uh, why it's addition of? There are some basic terms you need to know before starting. Very important for set theory and Venn diagrams, probability questions. Non mutually exclusive union of A and B. What are those terms? That's why I'm saying come to Discord. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A. Isn't this the same thing? Okay, this is for not mutually exclusive events. What are they? Okay, join me on Discord. Union means A or B or both happen. So the probability of both happen. There's no probability of both happening, right? Bye, pro boy. Bye. You said your friends will come, but you are going. Bye. Aman, can you come to my Discord? Because there will be people disturbing us on your Discord. सोना ज़रूरी है 103 के बुखार में. अरे यार, sorry. You can sleep. See you. आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे. Hope their names are not Karan Arjun. Discord, yes, but my Discord. Because in your Discord there are a lot of people. Okay, you don't have my Discord's thing, kya? Invite, I'll send you. You can join through video's description. But I'll put it in the chat. Oh, not accept, right? Send me the link. Here it is. So probability of A or B or both happening is probability of A plus probability of B. Not mutually exclusive event. हेलो. यो क्या हाल है? बस मज़े. कंफ्यूज थोड़ा. ये about this mutually exclusive event. स्क्रीन शेयर कर सकते हो? Okay, I'll screen share. हेलो.
हाँ, आई एम शेयरिंग, एक सेकंड. Hmm. Now can you see? Yeah. So about mutually exclusive event, what's Hmm. this? कि A or Hmm. B or both? This is read as probability of A union B. That is, you know about Venn diagram. No. I know about Venn diagram, about there's a circle and a circle inside, but I don't know about those calculation. Okay, कोई So बात there are नहीं. coinciding circles and there's one circle outside, so it's like questions like that, but calculations I don't know. कोई बात नहीं. ऐसा है ना, जैसे let A be animals, okay, and in B there are a dog. Your voice got cut off. In A circle and in B circle there are some common things, right? Okay. I'm giving you an example. Okay. A circle and Yeah, B and circle. draw another circle that is B. They are both different circles, right? Yeah, these are two different circles. In A, can you write animals? Okay, understood. Yeah. And so No, no, no. what? In circle A, you have to write animals and plants like these two words. Okay. Okay. And B? For an example. And in B, what about B? And in B, you can write dogs, Dog is an animal. water, dog, water, cat, air. Write four words at least, for example. So, बेसिकली एक ही चीज़ बी में नहीं है, करेक्ट? हाँ, एक ही चीज. देखो, कोई कोई चीज होता है जो कि ए और बी दोनों में होता है, ठीक है. बट अबाउट दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव probability, या. right? हाँ. This one, हाँ. wait a second, this one, mutually exclusive events. So when हाँ. A happens, B cannot happen. हाँ, एग्जैक्टली. So probability of A union B. इसको यही पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. So मैं कह रहा हूँ कि this बिल्कुल ही is तो रैंडम, हाँ, अलग अलग चीजें हैं. हाँ. this whole thing is probability of A union B, which comprises of probability of A and probability of B, correct? या, करेक्ट. So ये जब यूनियन की प्रोबेबिलिटी आती है तो कोई एक इवेंट ही हो सकता है, तो वाई इज हाँ. इट अ यूनियन? सो व्हेन ए विल अकर, then B will disappear or what? नो, इट विल नॉट डिसअप. इट कैन नॉट हैपन. So means that its probability is zero. या, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टुगेदर विद ए जीरो. So when we are talking about probability of A union B, तो उस पॉइंट पे तो एक ही प्रोबेबिलिटी है ना, या तो ए की या तो बी की, जब भी वो इवेंट होगा. बोथ हाँ. दोनों की तो नहीं है ना, कोई एक तो ज़ीरो बन जाएगा, नहीं. करेक्ट? हाँ, करेक्ट. And now if we go to not mutually exclusive events, now इसमें इसने सेम वेरिएबल्स क्यों यूज़ किए हैं? ओके, वॉट एवर, फॉर वॉट एवर रीजन्स, बट ए एंड बी लेट मी आर म्यूचुअली, दे आर नॉट let me turn म्यूचुअली up your एक्सक्लूसिव. volume. I cannot hear you properly.
Okay. या सो इसमें ए और बी सेम यूज़ किए बट डिफरेंट है, मतलब वेरिएबल तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसमें दिस इज़ द सेम प्रोबेबिलिटी माइनस व्हाट इज़ दिस साइन, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी सो ए माइनस बी। इंटरसेक्शन इज नॉट माइनस व्हाट इज़ इंटरसेक्शन? you Intersection means when be happen okay together. Okay. hmm. Students who play both football and together. Okay. Can you explain Intersection means this? it basically means which are common in both A and B. Yeah, understood. Like if we have a set of number 1, 2, 3 and another set of number 3, 4, 5, then A intersection B will be 3 because 3 is present in both. So Yeah. intersection is uh, that is used when we there is something in common. Can you explain this equation? Probability of Yes. A union B for not Uh, mutually exclusive events. hmm. We checked for mutually exclusive events. Now, what is different now? And can you explain this Okay. equation? It is showing. Uh, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में पता है क्या होता है which cannot occur at same time. If one occurs, the second one cannot. हाँ तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन उसमें कुछ होता ही नहीं है जीरो होता है ठीक है हाँ. मतलब नल सेट होता है उसको हम Okay. लोग बोलते हैं जीरो सेट या नल सेट जिसमें एक भी नंबर ही नहीं हो या फिर कुछ भी कॉमन फैक्टर ही नहीं हो हाँ. तो बेसिकली इसमें ये बोल रहा है जब ए यूनियन बी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए यूनियन बी का क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यही होता है इसका फॉर्मूला ठीक है Okay. Understood it ठीक है for mutually exclusive. Now, not mutually exclusive. हाँ जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है तो फिर क्या होता है ना कि उसमें इंटरसेक्शन भी रहता है ठीक है Okay. अब जैसे हम एज एन एग्जांपल वही लेते हैं एक सेट है तुम्हारा ए जिसमें नंबर है 1, 2, 3 ठीक है Okay. और बी एक सेट हो जिसमें नंबर है तुम्हारा 3, 4, 5 ठीक है 1, इसमें 2, 3, एक टर्म कॉमन है तुम्हारा कौन सा 4, 2, 5. नो थ्री थ्री कॉमन है 1, 2, 4. 3 और 3, 4, 5 में तुम्हारा 3 कॉमन Okay. हुआ ना 3, 4, 5. हाँ, 3 कॉमन है. 3 कॉमन है तो फिर तुम्हारा ए यूनियन बी इसमें क्या हो जाएगा बताओ A union B. Okay, I understood. A union B will be probability of A means 1 and 2, 4 and 5. Okay. Minus 3 will be because it is common. या आई मीन तो थोड़ा Wait, wait, थोड़ा wait a समझ second. लेना Wait a second. Let me check. So, probability of A are these three. Probability of B is these three. But we have to include 3 somehow, right? या If we intersect it, 3 will get सी पहले एक बात बताओ minus ए करेंगे. यूनियन बी क्या होगा A union B. सारा
सारा नंबर्स को लिख दोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 तक ही है। हाँ 1 2 3 3 2 12 आ जाएगा, राइट। हाँ और ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, जो सिर्फ कॉमन है। हाँ, उसको हम माइनस कर देंगे। हाँ या तो हम लोग का ए यूनियन भी फाइनल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। करेक्ट, अंडरस्टूड नाउ। या डू अब वी इसको वेन डायग्राम में अगर बनाना चाहोगे तो फिर दो सर्कल्स तुम कनेक्ट कर दोगे और पूरा का पूरा दोनों सर्कल्स को डार्क कर देना, ठीक है। दोनों कनेक्ट करो। हाँ, अब थ्री जो कॉमन दिस इज पार्ट है 3, इसमें, हाँ। वो उसमें 3 आ जाएगा, हाँ। एग्जैक्टली exactly। और हम लोग इसमें किसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी, यानी कि दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, राइट। तो इसमें पूरा का पूरा ये डार्क हो जाएगा, अगर दिखाना होगा प्रैक्टिकली तो। हाँ, ये कौन सा डार्क हो जाएगा? ये पूरा ए ठीक है ना? यूनियन बी 1 2 3 4 5 जिसमें आ जाए, यानी कि ए वाला सेक्शन भी और बी वाला सेक्शन भी। सो दिस होल थिंग इज ए यूनियन बी, करेक्ट? या दिस होल थिंग इज। या अंडरस्टूड। और इसमें ए इंटरसेक्शन भी क्या है, सिर्फ मिडिल वाला जिसको तुम हाँ, अभी 3। डार्क की हो, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड, या। ओके। What is this now multiplication rule? मल्टीप्लिकेशन Independent रूल। events and dependent events. हाँ, तो बेसिकली दो तरह का इवेंट होता है ये, पता है ना, हाँ अंडरस्टूड, कि ये पता है। जैसे एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है, तो आगे क्या होने वाला है उस पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। हम्म। लेकिन जैसे दो डाइस है हम लोग के पास, मान लो, ठीक है। और बोलता है कि हम लोग का क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस मिला के हम लोग का 10 से अबव नंबर आएगा, राइट। हम्म। तो एक में कंफर्म है कि दोनों में मिनिमम 5 5 रहेगा, तो ही हम लोग का 10 से ज्यादा नंबर आ पाएगा, समझे। हाँ, तो ये डिपेंडेंट हो गया। ये डिपेंडेंट बट किस पे हुआ है? दोनों डाइस पे? या दोनों डाइस पे ये एज एन छोटा सा पिद्दू सा एग्जांपल अब बताए इसका। जो मेन क्या कहते हैं एप्लीकेशन होता है वो बाद में अगर होगा तो बताएंगे। अभी मेरे ध्यान में आ नहीं रहा है कोई बढ़िया एग्जांपल। हाँ, एक सर्च कर लेता हूँ। डिपेंडेंट events in probability। अमन, आप तुम चैट जीपीटी यूज़ करते हो? मतलब बहुत, मेरे को तो आदत लग गई है। हाँ, कभी कभी हाँ करते हैं जब प्रोजेक्ट वगैरह होता है अच्छा। बनाने को तो। और मेनली ये यूट्यूब के लिए कुछ जानना बनना रहता अरे, था। प्रोजेक्ट कौन आपको मैथ्स में कौन सा प्रोजेक्ट आता है? अरे यार, केमिस्ट्री भी है मेरा। अच्छा। और इन मैथ्स में भी नया नया थ्योरम सब जो होता है तो कॉलेज के बुक में जो दिया हुआ रहता है ना, तो उससे ज्यादा बढ़िया हमको चैट जीपीटी का एक्सप्लेनेशन लगता है, हाँ, लॉजिकल वाला। मेरे को तो एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स दिए होते हैं ना, उसको भी अगर मैं सर्च कर लूँ ना चैट जीपीटी में, तो वो गुजराती में भी मेरे को वो लिख के दे देता है। मतलब मेरे को बुक्स में ढूंढना ही नहीं पड़ता। जब एग्ज़ाम के 1 2 घंटे पहले पढ़ने बैठूँ ना, तब सेमेस्टर के लिए, तो ऐसा होता है। सो आप पॉलिटिकल साइंस पे हो ना। हाँ हाँ। बढ़िया बढ़िया। अ, आपको कोडिंग भी आता है, आप यूट्यूब भी अरे करते हो, कोडिंग मतलब आप मल्टीटास्किंग हो कहाँ तो। आता है यार, अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ पाइथन। अच्छा, हाँ, शुरू किए। शुरू किया हूँ, मतलब 1 2 महीने से ओके। प्रॉपरली। बट ये सब करना होता है ना, वही ना, मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव वो तो हो ADHD, जाए। दैट्स व्हाई। बढ़िया, एक्सप्लोर करने का सही टाइम है वैसे। हाँ,
So independent events, as you said, toss a coin, roll a die. Coin result has nothing to do with die result. Independent. So it took कि coin और die में कुछ relation नहीं है. They are independent Hmm. of each other. Hmm. So this way, event A's probability is 1 by 2. Event B's probability is 1 by 6. So if you probability of this is intersection, right? Yeah. Probability of A intersection B is 1 by 12. The two do ये not affect बेसिकली each other मतलब हम लोग independently. का मानना है कि इंटरसेक्शन ऐसे हम लोग को याद हो गया था बचपन में कि जहाँ भी इंटरसेक्शन देखो वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकालते हैं, तो दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके। ओके, बट हाँ। वैसे अगर देखा जाए तो इट हैज़ नो इंटरसेक्शन, और डज नो इट? नो नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ये बोलेगा कि टेल भी आ जाए और हम लोग का 5 आ जाए एक डाइस में, ठीक है, टेल आने के बाद 5 आ जाए, होता है ना। हाँ. What is the probability of getting a tail and getting a 5 on a die? ओके. तो उसमें हम लोग का 1/12 हो जाएगा। ओके, आफ्टर 12 इवेंट्स दैट There will वन be कैन. one event हाँ, probably which will be getting our result. बट फिर उसको इंटरसेक्शन क्यों कहा? इंटरसेक्शन इज़ फॉर कॉमन थिंग ना, कि जो कॉमन है उसमें इंटरसेक्शन क्यों क्या कहा वहाँ पे? हेलो, कुछ तो इशू है. हेलो, आई थिंक योर नेट हैज सम इशू. Intersection in probability. Probability of two or more events is a set of all outcomes that are common to every event involved. It represents the scenario where all the events occur simultaneously. Okay, it's because ki all the events occur simultaneously that one probability of 5 on dice and tail on this, it is happening simultaneously. That's why it's common, and that's why it's called intersection. 1 by 2 into 1 by 6, 1 by 12. Let's say, okay, you multiply basically, yeah, because this thing has two events and this thing has 6. So even if you do a simple thing, tail and head, there is 6-way path. Okay, because it has 6 numbers on dice, 1 2 3 4 5 6, and this way also 6. So total, in total it is 1 by 12. Got it. So this was what for? Hello, can you hear me now? Hello, 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 hello. I don't know why. Hello. हाँ, वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी. कुछ तो हुआ था। पता नहीं यहाँ पे क्या होता है. बट ये समझ गया मैं. ये इंटरसेक्शन वाला जो हम देख रहे थे, हम्म। उसके आगे क्या था कि कहाँ पे था मैं? हम्म। मल्टीप्लिकेशन रूल
तो ओके। पहला इंडिपेंडेंट इवेंट जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये बेसिकली तब का बात किया जाता है जैसे अभी आपने नहीं देखा कि एक डाई को एक तरफ उछाल रहे हैं और एक कॉइन को एक तरफ उछाल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही दो रैंडम इवेंट है, ठीक है। हाँ। तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। हाँ और एक होता है डिपेंडेंट इवेंट, जैसे कि पूछेगा कि आप आपका क्या प्रोबेबिलिटी है कि लगातार 5 बार टेल्स आ जाए, ठीक है। हाँ। कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो लगातार 5 बार टेल्स आने का क्या है प्रोबेबिलिटी, तो वो डिपेंडेंट आपका हो जाता है कि पहला डिपेंडेंट बार ऑन टेल आएगा, हाँ। हेड्स। क्योंकि पहला बार अगर टेल आएगा तो ही हम लोग आगे जाएंगे, अगर पहला बार में हेड्स आ जाएगा तब तो नहीं ना जाएंगे। हाँ तो बट ये ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट किस पे होता है, मतलब अपने आप में ही? आउटकम पे होता है, ठीक है। अच्छा। पहला आउटकम पे डिपेंडेंट होता है। ओके। सो ये इंडिपेंडेंट भी आउटकम पे ही होता है कि पहले आउटकम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हेड या एग्जांपल टेल है। सिलेक्टिंग हम्म, स्टूडेंट्स फॉर। ओके, फिर सेलेक्ट हूँ मैं डिपेंडेंट इवेंट इन प्रोबेबिलिटी एग्जांपल। Cards without replacement. A deck of 52 cards. Event first card drawn is a heart. Event B, second card drawn is a heart. After drawing one heart, the deck has 51 cards and the number of hearts changes. So probability of B depends on what happened in A. Okay, as you said. Okay. हम्म, Okay, so event A, event B occurs after event A. That's why it's dependent on it. या And it's saying only कि second card drawn is a heart, so it will obviously depend on first card drawn. हम्म, This is most common. Balls from a bag without replacement. Bag has 6 red balls and 4 blue balls. First ball drawn is red. Event B, second ball drawn is red. So after removing one red, the probability for the second red changes. Okay, अगर वहाँ पे blue आया था तो वो इवेंट ही ख़त्म हो जाता, ठीक है। So for this we have formula of probability of A intersection B is probability A into, what is this sign? व्हाट इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश, इसको क्या E by बोलते A। हैं। आहा, इसको क्या बोलते थे, हम भी भूल गए। आपका भी रिवीजन हो जाएगा मेरे को लगता है। हाँ, एक्चुअली लास्ट 11th में पढ़े थे, अभी तो थर्ड ईयर में आ गए। अब नहीं आता क्या? आता है यार, ये तो खुद दूसरा मतलब चैप्टर अब था। कॉलेज में नहीं आता ये? हाँ आता है ना, अच्छा। अगले सेमेस्टर में। मैं तो वैसे एक दिन पहले ही पढ़ता हूँ कॉलेज में भी, क्योंकि चल जाता है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, सिलेबस इतना लेंदी नहीं होता है। फिर मेरे को स्टिल 70 प्लस आ जाता है परसेंटेज। अरे तब और क्या ही चाहिए भाई। हाँ वही तो। Probability of A and B happening together is ए equal to probability. प्रोबेबिलिटी Okay. ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लिखा है, हर चीज है। Okay, okay, got it. डी गिवन दैट हैज ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। अच्छा। ये मल्टीप्लिकेशन सेम है बट बिकॉज probability of B depends on A, that's why कि given that A has already happened,
बेसिकली ये सेम ही है, बट यहाँ पे अजम्पशन ये रहेगा हमारा कि ए हैज़ हैपेंड, Yeah. हैपनिंग टुगेदर, एंड इन हाँ, इंडिपेंडेंट इसको इवेंट्स दिस इसको वाज नॉट कंडीशनल इजी. प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हाँ, ये बी करेक्ट. स्लैश से जो है ना, बी बाय ए, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, बट सी, आफ्टर इवेंट ए हैपेंड, लेट्स से हमारे पास 6 बॉल्स रेड के थे और एक 4 बॉल ब्लू के थे. ए में हमने हम्म। बॉल निकाला और वो रेड का आया, हम्म। करेक्ट. तो नाउ व्हेन हम्म। वी गो टू प्रोबेबिलिटी बी, now we will हाँ। have 5 balls of red, so हाँ। total outcomes 11 and नो, fav नाइन, नाइन आइट, 5 नाइन 5 आउटकम plus है। 4, हाँ 9, so total 9. और हमारा favorable outcome will be 5 फोर because या, हाँ red. फाइव, हाँ। हाँ। हाँ, तो दिस वे उसके टर्म्स बदल जाते हैं इन इन डिपेंडेंट इवेंट्स, कि वी हैव टू चेक फॉर इवेंट ए, करेक्ट. या। So basically you're multiplying probability of A and into B, but यहाँ पे we have to be extra careful, right? और what if कि यहाँ पे जो given है कि given that A has already happened, if A didn't happen, कि हमको first chance में red नहीं आया, then what? Then nothing, right? कुछ भी नहीं, हाँ, तब तो होएगा ही हाँ, नहीं। then this whole thing nullifies, correct. या। हाँ। तो मतलब इसके क्या है? कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, 10 11 जैसे दिए हुए हैं. 10, हाँ। हाँ. मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशनल रूल वाज दिस, इंटरसेक्शन, करेक्ट. ये तो मेरे को याद रह गया. कॉम्प्लीमेंट रूल भी मेरे को पता चल गया. हाँ, ये तो इजी था. ये तो मैंने भी पढ़ा था 10 में. हमने ये दो चीज़ें पढ़ी थी, देखो, कि फेवरेबल हाँ। आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और पी नॉट ए इज़ 1 माइनस पी ए, बिकॉज टोटल 0 से 1 में प्रोबेबिलिटी होती है. तो अगर किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कुछ है तो उसके ना होने की 1 माइनस वो जिसकी प्रोबेबिलिटी है. ओके, हाँ। नाउ वी कम टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मोस्ट अंडररेटेड बट एक्सट्रीमली कॉमन. यहाँ पे ये मेरे को, सेम चीज है। ओके, सम चैट, बट फिर से क्या था, ये साइन क्या था हमारा. ओके, गिवन दैट दिस थिंग हैज़ हैपेंड, ये था ना कि प्रोबेबिलिटी हाँ। ऑफ ए दैट गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड या। will be equal to probability A intersection B upon probability B. Can you give light on this? ये मतलब क्या है, प्रकाश डालिए इस पे. ये बेसिकली ये क्या है ना, जैसे आपने अभी बताया कि 6 बॉल है हमारे पास रेड का, हाँ. 4 बॉल है ब्लू का, उसी का एग्जांपल लेते हैं फिर से, ठीक है। हाँ. अब एक बॉल हम लोगों ने निकाला, ठीक है, तो वो रेड निकल गया, ठीक है, और हम लोग को रेड बॉल से निकालना है, हम्म. तो जो नेक्स्ट बॉल निकालेंगे, तो वो रेड होगा या ब्लू होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके. तो पहले हमारे पास 10 बॉल्स था, 6 + 4, ए वेट अ तो सेकंड, रेड। इसमें ये साइंस में कंफ्यूज हुई. ये तो ये है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट गिवन दैट ए हैज़ हैपेंड. नो, ये बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी है ना. गिवन दैट बी हैज हैपेंड। क्या बी के ए. Probability of A when B has happened. B. ओके.
और हमारा पहले में था probability of B given that A has happened. Okay, correct. But यहाँ पे A और B में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, क्योंकि A फर्स्ट होगा ऐसा है कि मतलब ये वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा कि वी कैन लुक एट आइदर ऑफ साइड. आ, ऐसा कुछ है कि वैसे पहले होना A तो होगा चाहिए, कि B होगा क्या? पहले तो बी ही होना चाहिए जहां तक हमको याद है। पहले B होना पर चाहिए. यहाँ पे तो A हुआ था ना, बट मल्टीप्लिकेशन रूल में ये हम भी जब सही एग्जांपल है, दे. मतलब हाँ. ये भी कुछ गलत नहीं है। हाँ. आई थिंक इसका इट डजंट बेसिक मैटर. फॉर्मूला हम लोग को पढ़ाया जाता था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बेसिकली इसमें बी की जगह ए है, तो फिर Okay, सेम ही it is फॉर्मूला है। about variable and define what you define as a variable. हाँ बिल्कुल। So probability of A given that B has happened is equal to intersection B upon probability of B. मतलब कि नहीं समझ में आया। समझ गया. क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो A में होगा और B में होगा वो हम्म। डिवाइड हो जाएगा जो B में होगा उससे. वेट. हाँ हाँ हाँ, सही जा रहे हो। तो जो प्रोबेबिलिटी लेफ्ट होगी, तो इंटरसेक्शन तो निकल गया, तो बी में हम्म से जो निकला था वो पार्ट बचेगा 1 अपॉन उसमें. तो इंटरसेक्शन तो हमारा हम्म निकल गया, लेकिन जो बाकी का पार्ट बचा बी में से जो कॉमन नहीं है ए में, हम्म। 1 अपॉन दैट. बट दैट डज दैट मीन एनीथिंग? हम्म, अच्छा इसको हम एग्जाम्पल ले, ठीक है, तुम सब हमको बताना क्या नहीं समझ में आया। ओके. वही एग्जाम्पल 6 और 4, ठीक है, 6 रेड बॉल्स और 4 ब्लू बॉल्स, ठीक है। ओके. ए इज़ की फर्स्ट रेड बॉल बॉल आएगा क्या? क्या? ए इज़ रेड बॉल आएगा. हाँ, ए इज फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक है। बी इज सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड, ठीक सो है, ये है हम लोग का। ये ये फर्स्ट बॉल नहीं होना चाहिए बी, हम अगर टर्म्स की बात करें तो. सॉरी। बी फर्स्ट बॉल ड्रॉन होना चाहिए ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन हाँ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज़ हैपेंड. हाँ तो ये फर्स्ट कर देना हम, हाँ। और ये सेकंड. हम्म, ओके. अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, इसको ऐसा लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये क्या होगा कि पहला बॉल हम लोग निकाले तो वो रेड आया, ठीक है। ओके, यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है. ठीक है, तो उसका क्या था, बट बता क्या इसकी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास 10 बॉल्स थे, 6 + 4, हाँ मतलब वो टोटल हाँ। आउटकम्स है, और 6/10 मतलब कि 3/5. हम्म ये यहाँ पे हमने लिख दिया परफेक्ट. हम्म अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हम्म। तो क्या चांस है इंटरसेक्शन मीन्स कि कॉमन इवेंट हैपेंस? नहीं, ट्राई करो, हम हैं यहाँ पे। हाँ, कि सेम बॉल आ जाएगा, सेम रेड बॉल आ मतलब रेड जाएगा. बॉल आएगा, रेड हाँ, बॉल। सेम रेड बॉल आएगा. सेम रेड बॉल नहीं। ओके, हाँ, मतलब रेड बॉल आएगा.
सो हाँ सेम उसकी रेड बॉल कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी होगी, दिस हाँ। इज इंटरसेक्शन। हम्म, देखो इनिशियली क्या था, हम लोग के पास 6 रेड बॉल था, ठीक है, हाँ और 4 ब्लू बॉल था। तो टोटल हम लोग के पास 10 बॉल्स था, ठीक है। हाँ। अब क्या हुआ कि पहला जब हम लोग बॉल निकाले और वो रेड आया, ठीक है, हम्म, तो हम लोग के पास 9 बॉल्स बचा। हाँ। 9 बॉल्स बचा तो फिर हम लोग का आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 9 है। और फेवरेबल 5 है, बट आई एम कंफ्यूज फेवरेबल अबाउट 5 हो गया। इंटरसेक्शन पार्ट। ये इंटरसेक्शन तो यही आएगी क्या? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है मेरे को। हाँ, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला देखता हूँ मैं फिर से। इंटरसेक्शन का क्या था फॉर्मूला? बस मल्टीप्लाई करना। हाँ, अरे वो ही भूल गया था मैं। ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। ओके, गॉट इट। अब मैं कर सकता हूँ इसको। तो बी तो यही है 3/5। अब मेरे को हम्म, इंटू करना है, क्योंकि अब मेरे पास फेवरेबल इवेंट 5 है, तो आई राइट 5, और 9 टोटल इवेंट्स है, तो दिस विल हम्म, कट ऑफ, दिस इज 1/3। So let me do this 1/3 into 5/3. This is how it comes, right? 5/9. नो नो नो, 6/10। देखो पहले हम लोग का जो था ना, 6/10 होता हम लोग का फेवरेट, सॉरी क्या कहते हैं उसको, फेवरेबल आउटकम। हाँ, तो उसकी और 3/5 फिर आई ना। हाँ 3/5 आई, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/9 से, हाँ दूसरे फेवरेबल आउटकम से। हाँ। तो ये हो जाएगा हम लोग का आ, लगातार 2 बार सीक्वेंस में रेड बॉल आने का तरीका। ये वन बाय ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। वैसे ये 1/3 आया ना। 1/3 ही आएगा। अब लेकिन मैं फर्दर कैलकुलेशन ना करूँ क्या? 5/9 नहीं आ रहा? 5/9 कैसे आ रहा नीचे ये था ना डिवाइड में। है? डिवाइड में ना। से इट was probability of A given that B has happened is equal to probability of A intersection B divide by probability of B। तो ये B डिवाइड में है ना, हाँ हाँ हाँ। तो 1/3 इंटू 5/3 नहीं होगा क्या? 5/9। आ, होना तो चाहिए, लेकिन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना, इस केस में नहीं होगा जिसमें हम लोग बात कर रहे क्यों? हैं। क्यों नहीं होगा? आ, देखो पहले अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है, वो कब होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब वैसे हमने फर्स्ट बॉल रेड ही ड्रॉ की थी, हाँ, तो होना चाहिए ना। एक बार सेंटेंस ठीक से Conditional probability is probability of A given that B has happened is equal to probability A intersection B upon probability of B। ओके। तो मेरे ख्याल से यही आएगा ना, 5/9, करेक्ट। तो 5/9 आ गया। हाँ 5/9 आ गया। एक और मैं पूछ लेता हूँ इसको। आ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। पूछ लेता। वही सही रहेगा। नाउ इवेंट, हमने इवेंट ए लिया था एज अ सेकेंड थिंग, और फर्स्ट वॉज इवेंट बी। बी इज
first drawn ball is red and A is equal to second drawn ball is red. We have 6 red balls and 4 blue balls in a basket. Calculate. Okay, it's showing 5 by 9, correct. Yeah, correct, एकदम. Or probability of B is this and probability of A intersection B is 1 by 3, correct. Now I'm asking, we got to learn about this mathematically, correct, but अगर हमको conceptually समझना है तो how can we understand कि probability of A given that B has happened और उसमें probability of A intersection B is probability of A into B or probability B. हाँ, इंटरसेक्शन बी में हमको इंटरसेक्शन बी की जो चीज़ है हाँ, हाँ वो कैंसल आउट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी बी में जो चीज़ है उससे, ठीक है. हाँ, तो उससे ये पता चलेगा कि हम जो इक्वेशन बचा उसमें आंसर होगा 1/, वॉट एवर इज़ नॉट कॉमन बिटवीन ए एंड बी विच इज़ इन बी. तब जो बी में बची चीज़ जो ए के साथ कॉमन नहीं है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. आ, जो आप बोल रहे हैं वो थोड़ा सा मेरे भी मत्थे से ऊपर जा रहा आप कैसे समझते हो मतलब इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? है. वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम तो. बनाना है वेन डायग्राम? So, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम इसी तरह बता देते हैं. मेरे को फिर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये हो रहा है कि इसका फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? ये तब निकाला जाता है जब बेसिकली एक इवेंट हो चुका होता है और दूसरा इवेंट होने वाला होता है, ठीक है. हाँ जैसे कि हम लोग को एक ड्रॉ मिला, ठीक है. बोला है कि 20 बच्चे के क्लास में 10 बच्चे को चॉकलेट मिलेगा, ठीक है. हाँ तो उसमें ड्रॉ होता है, 20 बच्चा अपना नाम लिख के डाल देता है एक पुर्जा बना के, ठीक है. अब टीचर एक एक करके नाम का चिट्ठा पढ़ती है, ठीक है. हाँ पहला में एक बच्चे का नाम नहीं है, मान लो कि मेरा नाम अमन है, ठीक है. तो मेरा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 10/20. हाँ इनिशियल प्रोबेबिलिटी यही हुआ ना. हाँ 1/2. अब पहला चिट्ठा खुल गया, ठीक है. हाँ उसमें मेरा नाम नहीं आया. अब मेरा प्रोबेबिलिटी क्या बचा? अब अब फिर से आपका चिट मतलब खुलेगा क्या चिट्ठा, मतलब दूसरे बच्चे का क्या हुआ प्रोबेबिलिटी? हाँ, मतलब मेरा नाम आने का प्रोबेबिलिटी क्या है अगर पहले वाले में मेरा नाम नहीं आया तो? 10/19. गलत है. अच्छा हम कंडीशनल में जाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल कंडीशनल में जाना पड़ेगा. तो पहला तो बट हम लोग का वैसे नौ हम ही चॉकलेट 9 ही बचा है, ठीक है. हाँ और नाम भी घट के 19 हो गया. तो अब ये इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले, ठीक है. और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे. सो बेसिकली क्या करना होगा ना हम लोग को इसमें, पहले 1/2 आया था, राइट. वैसे बट हमारे 2 इवेंट, अच्छा हाँ एक इवेंट तो हो गया तो हम लिख सकते हैं, करेक्ट.
तो हम 1/2 करेंगे नीचे, हाँ, और यहाँ पे हम करेंगे 1/2 इंटू, अब तो प्रोबेबिलिटी 10/19 है ना। 10/19 है बिल्कुल, लेकिन हम लोग को इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे ना, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, पहला में मेरा नाम नहीं आया तब ना दूसरा में मेरा खुला, राइट। हाँ, तो इंटरसेक्शन में अब यहाँ पे 10/19 करूँ ना मैं, मतलब 1/2 इंटू 10/19। 1/10 इंटू 2, हाँ बिल्कुल, 1/2 इंटू 10/19, 10 नहीं 9 ही बचा ना। हाँ सॉरी, 9/9, हाँ, नहीं 9 नहीं, आपने बोला कि नहीं आया ना चॉकलेट। चौक एक एक बच्चा को एक एक चॉकलेट मिल रहा है, ठीक है। हाँ, पहला 10 को मिल जाएगा चॉकलेट, ठीक है। पहले 10 को मिल जाएगा। मतलब पहले 10 में जिसका नाम आएगा चिट्ठे में, उसको हाँ मिल जाएगा हाँ, समझ चॉकलेट। गया। तो तो अब कंडीशनल, फेवरेबल। उसका मैं क्या हाँ, लिखूँ फॉर्मूला? फर्स्ट तो जो 1/2। इवेंट हुआ वो हम डिपेंड में, मतलब डिवाइड में लिखेंगे 1/2। हाँ बिल्कुल। अब इंटरसेक्शन हमको निकालना है दो इवेंट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो थी 1/2, हाँ, तो वो लिखी हमने 1/2 हाँ, इंटू, अब फर्स्ट इवेंट में चॉकलेट मिली थी कि नहीं मिली थी? नहीं मिली थी। नहीं मिली थी तो 10/19। आ, मुझे नहीं मिली थी, किसी और को मिल गई, ओए क्या, तो 9/19 होगा। हाँ, मतलब मिल गई थी चॉकलेट, हाँ चॉकलेट मिल गई थी। क्योंकि हमने मतलब, हो सकता है कि उसमें वो कंडीशन लगाया हो ना कि इफ़ चॉकलेट कम्स फर्स्ट बच्चे को। हाँ, तो तो अब हम लोग का दूसरे बारे में, मतलब दूसरे चांस में हम लोग को चॉकलेट मिलने का इतना प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। समझे? बट दूसरे चांस में अगर मैं बताऊँ, हम्म। तो सिंपल नहीं है कि चांस तो 9/19 ही होगा, सॉरी, हाँ 9/19 ही नहीं होगा, सिंपल क्यों नहीं नहीं नहीं, है? प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाता है, ठीक है। या तो बढ़ता जाता है या तो घटता जाता है, कंडीशनल में यही एक दिक्कत होता है। वेट, ये फॉर एन इन्फ्लुएंस एग्जाम्पल। क्यों हो रहा है? देखो, अगर हमने सीधा 9 बच्चे और 19 लोगों से स्टार्ट किया होता, सॉरी 9 चॉकलेट और 19 बच्चों से स्टार्ट किया होता, तब तो सीधा सीधा आ जाता। तो 9/19 आता। बट हम्म। वॉट वॉट फर्स्ट इवेंट मेड डिफरेंस, उसमें उसने चेंज किया क्या कि कंडीशनल लाना पड़ रहा है हमको, क्योंकि सेम ही तो है 9/19, 9 चॉकलेट है और 19 बच्चे, तो सीधे क्यों नहीं हुआ रहा है? यही तो मैथ्स है। नहीं, रीज़न यही मैथ्स है। क्या है? बताते हैं रीजन क्या है। चलो ये एग्जाम्पल छोड़ो, एक हम तुमसे ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हाँ, मान लो कि तुम्हारे सामने में तीन गेट्स है, ठीक है। ओके, उसमें से एक के पीछे शेर है, बाकी दोनों सेफ है, ठीक है। हाँ, ठीक है ना? एक के पीछे शेर है बाकी सब, हाँ। ठीक है, तो तुम्हारा क्या वैसे प्रोबेबल वैसे चांस वैसे है कि वैसे तुम। एक सेकेंड, कंडीशनल लगा के फॉर्मूला भी 9/19 ही आया इसका आंसर। व्हाट? हाँ, ये तो क्योंकि 1/2 तुम ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दियो ना। हाँ, तो वही तो नहीं था, और क्या था? हाँ, ऑब्वियसली यही किया है मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लाना था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे डिनोमिनेटर में होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट बी इवेंट फर्स्ट अकर हुआ ना।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बताओ? 1/2 होगा और क्या होगा? नहीं, हमको एक ही चॉकलेट चाहिए, मतलब ठीक है। तो हम जो समझा रहे हो उसको पहले, हम एक जनरल क्वेश्चन जो पूछे उसका जवाब दो पहले, हाँ फिर हम इस पे बताते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने 3 गेट्स है, राइट? हाँ। एक के पीछे लायन है, बाकी दोनों सेफ है। तो तुम्हारा बचने का चांसेस क्या है? एक के पीछे लायन है और बाकी दो के पीछे शेर है। 2/3 होगा बचने का चांस। बिल्कुल सही जवाब है, 2/3 होगा। हाँ। अब हम बोलते हैं कि एक गेट खुल गया, ठीक है, ओके। और उसमें से कुछ नहीं निकला, मतलब वो सेफ गेट था। ओके, इसमें से कुछ नहीं निकला। मेरे को इसमें ये से आप जो बता रहे हैं ना, मेरे हम्म को ये याद आ रहा है कि मैंने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था इस प्रॉब्लम के बारे में। और यहाँ पे जो ऑब्वियस आंसर लगता है वो ऑब्वियस आंसर नहीं होता है। आई लर्न ये दिस कि दिस इज़ अ एग्जैक्टली फेमस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसी को कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स विल ट्राई टू कैलकुलेट। एक में शेर है और एक में हाँ, नहीं है। हम्म तो अब तुम्हारा बचने का चांसेस क्या है? जो कन्वेंशनली मैं कहूँगा कि 1/2 ले, बट लेट्स कैलकुलेट ओके हम्म, थ्रू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given that probability of b that okay probability of a that given that b has happened, हम्म, this is conditional probability. Now हम्म, denominator will write probability of b, but intersection means let's try probability of a into b. हमने लास्ट टाइम मेरे को लगता है वैल्यू गलत हो सकता है कर दियो। probability हम्म। of b is 1 by okay पहले 2/3। इवेंट क्या है वो क्लियर रखना, ठीक है? हाँ मतलब ए इसमें कौन सा इवेंट है, बी कौन सा इवेंट है, क्लियर रखो। हाँ सॉरी, वही करता हूँ। बी इवेंट इज कि आई विल बी सेफ, मतलब शेर नहीं आएगा। तो उसकी हम्म 2/3 हो गई। पहले बार में, हाँ। यहाँ पे भी है कि शेर नहीं आएगा एक ही भी, ओके, मतलब करेक्ट। करेक्ट। तो हाँ, तो 2/3 की हमने। हम्म अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिकॉज ये हो गई है, हमने खोल दिया था ये, तो इट विल बी वन हम्म बाई टू। और सेम मेरे को लगता है हम मैं कुछ तो कर रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सही सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। कैंसिल हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 ही तो आएगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलती हुआ। हाँ वही तो। लेट्स आस्क चैटजीपीटी या भाई फेमस ज्यादा बेहतर समझा पाएगा। हम भी क्वेश्चन। नहीं समझा पा रहे अभी, और हम खुद भूल गए कैसे लायन समझा। एंड 3 gates related to conditional probability. Can you explain and do the calculation? The famous lion and 3 gate puzzle. The story behind one gate is equal to a lion. You die. Behind 2 gates is equal to freedom. You peek a one gate and don't open it yet. The who knows where the lion is opens on one of the other gates and shows you are safe
gate, no lion. Then the guard asks, you want to switch the other to the other opened gate. The question, should you switch? Does switching improve your chances? Okay. हाँ, मेरे को अब याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन था. You pick one gate, but don't open it yet. The guard, who knows where the lion is, opens one of the other two gates and shows you a safe gate. Then the guard asks, do you want to switch to the other unopened gate? Should you switch to switching improve your chances? अबे यार इसमें स्विच कर देना चाहिए. ये हाँ ये लेकिन ये चूतियापा क्यों है मेरे को समझ नहीं आ रहा. ये कह रहा है कि गार्ड ने सेफ गेट बताया, उसको पता था. ये क्या बात हुई? तो गार्ड को पता था कि किसमें है और किसमें नहीं है, ठीक है. हाँ तो वो ऐसे ही पूछ दिया कंटेस्टेंट से कि आपको स्विच करना है या नहीं करना है. हाँ ओके. तो स्विचिंग अब डबल अगर तुम सच. स्विच कर देते हो ना, हाँ तब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बचने का चांसेस बढ़ जाता है. ओके. Switching doubles your chance of survival. Probability after switching is equal to 2 by 3. If you stay is equal to 1 by 3. Now let's understand why. Clean. Before the guard opens a gate, you pick one of 3 gates. Probability your chosen gate has the lion is equal to 1 by 3, and probability lion is in one of the other 2 gates is equal to 2 by 3. Guard opens a safe gate. The guard always opens a gate without the lion. So what happens? Case 1, you choose the lion 1 by 3. Guard opens one of the 2 safe gates. The remaining unopened door is equal to safe. You choose safe. Guard must open the only other safe door. If you तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या था? 2/3 था. हाँ हाँ फिर जब कंडीशन लग गया तो फिर तो फिर मतलब जब एक गेट खुल गया और बोला कि ये का तुमको चूज करना है, तो फिर कौन सा मतलब क्या बोल रहे हैं हम भी यार. अरे मेरे को ये कंफ्यूज कर रहा है चैट जीपीटी कि गार्ड, अबे गार्ड एक गेट खोल दिया तो पता नहीं चल गया कि है कि नहीं. हम्म तो मतलब सेफ वो गेट को खोलना है, ठीक है. हाँ तो अब वो स्विच करने का वो क्यों ऑप्शन क्यों दे रहा है? मैं तो अब सेफ गेट के थ्रू चला जाऊंगा ना बाहर, क्योंकि उसने अरे खोल यार, दिया है. नहीं नहीं, वो बोल रहा है. अरे मान लो कि गेम में तुमको ना लास्ट तक टिके रहना है, ठीक है. हाँ ऐसा मान लो. मैं कहता हूँ कि यूट्यूब यूट्यूब खोलता हूँ, उस पर देखता हूँ. सुनो सुनो, मेरा बात सुनो एक हाँ बार. हमसे समझ लो, उसके बाद तुम ओके. यूट्यूब हाँ खोलना, ठीक है. बताओ. पहले हम लोग का सेव बचने का चांसेस 2/3 था, हाँ ठीक है. और एक गेट खुल गया, ठीक है. मान हाँ लो कि एक गेट खुल गया, ठीक है. ओके. तो अभी भी अगर हम लोग लास्ट तक टिके रहे तो हम लोग को प्राइज मिल जाएगा, ऐसा मान लो, ठीक है. हाँ कि हम लोग लायन वाला नहीं चूज किए तो फिर हम लोग को प्राइज मिल गया. अब फिर वो बोलेगा कि तुम चूज करो ये अपना जो गेट है तुम जो चूज किए थे उसी पे टिके रहना है या फिर दूसरा गेट को चूज करना है, ओके. ठीक है. तो अगर तुम उसी पे टिके रह गए,
कि नहीं हम तो यही गेट से जाएंगे, ठीक है, हाँ तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि तुम जमजट्टर जैसे पहले ही जिस गेट को चूज किए, तो आउटकम से मतलब ही नहीं है। तुम्हारा 1/3 का 1/3 चांसेस, मतलब एक ही गेट पे तुम्हारा टिका हुआ था, तो शुरू से जो आउटकम आना था वही आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर उस मोमेंट पे तुम स्विच कर जाते हो, हाँ, तब क्या होगा? तब आई थिंक कि ये इंफॉर्मेशन रिवील वाली है कि नाउ आउटकम लेस हो गए ना, तो योर आउटकम प्रोबेबिलिटी लेस हो गया। चेंजेस। हाँ, वही ना, मतलब एक गेट इज नाउ आउट ऑफ इक्वेशन, डज हाँ, दैट मीन कि नाउ बिकॉज आउटकम आर लेस, favorable outcome is still 1 but probability increases. देखो जो तुम्हारे पास गेट था, ठीक है, हाँ। जो तुम शुरू से चूज करके रखे थे, हम्म। उसका 1/3 प्रोबेबिलिटी था, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था? 1 था ना। हाँ। तो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, वो दूसरे गेट पे चले जाता, ठीक है। तो हम्म। 1 - 1/3 दैट इज 2/3 ऐसे करके होता। अच्छा, हम्म। इसको मॉन्टिस हॉल कहते हैं। क्या मॉन्टी कहते हैं? हॉल, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब ये फेमस प्रॉब्लम है, ये तो हम भी जानते थे। हाँ, देख रहा हूँ कौन सा वीडियो देखूँ, इस पे व्यूज़ इतने कम है बे। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, लेट्स सी दिस, देखते क्या हो। हम्म। मैं थोड़ा आवाज़ बढ़ा देता हूँ स्ट्रीम पे। अब समझ में आया, देखो। तो नाउ फ्रॉम स्टार्ट उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। If he switches, it will become 1/2.
if we start off with the numerator, so what we're interested in working out here is the probability of event A and event B occurring. Well, that's easy enough to work out. The probability of event A occurring, we know from beforehand, is just a third. And we know that the probability that the game show host will show a goat behind door 2. हेलो हाँ ब- बताओ. समझ में आया क्या? एकदम से आवाज़ क्यों बढ़ गई? माइक चेंज किया तो क्या मतलब? नहीं कुछ भी चेंज कहाँ की? आवाज़ बढ़ गई आपकी. ओ, अच्छा कम कर देता हूँ. Is in this case going to be a half, because half the time the game show host will open door 2 and half the other time he will open door 3, because either one of these might be the car. ओके. So just to be clear here, this half here is because half the time the game show host will have to open door 2 and half the time the game show host will open door 3. And the time when he opens door 2 will either be the situation where there is a car behind door 1 or behind a car behind door 3. And the situation where he opens up door 3 will be just the same, except there's either a car behind 1 or a car behind 2. So that's also going to be half. So half times door 2, half times door 3. So numerator, how do we work out the denominator? Well, so what we're trying to do here is work out the marginal probability here. And we know from the marginal probability is basically just a sum over all possible values of the first order probability, so the first random variable A. So we're summing over the probability of A and B occurring across all potential values of A. So firstly we have our probability, the joint probability of A and B occurring, and then we have the situation where not A occurs and event B occurs. So we already know this first term here, this is just going to be a third times a half, but it's this second term that's a little bit more tricky. We need to get careful and think about this. So one of the times when not A occurs is when the car is actually behind door 2. So not A here is represented by नॉट ए ऑफ बी. के ऊपर से जा रहा है क्या? ये मेरे को ये नहीं पता. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज ये सिग्मा साइन ए और ये क्या है? सिग्मा सिग्मा मींस बेसिकली एडिशन के लिए बोला जाता है. क्या लिखा है इसने? इसमें लिखा है सिग्मा ए तक का एडिशन. ए इज स्टार्टिंग लिमिट और एंड लिमिट? एंडिंग एंड लिमिट अपर लिमिट. अपर लिमिट. ओके. उसमें ये क्या है? एड नॉट बी. मेरे को ये तो समझ में आ गया कि ऐसे थोड़ा अप नॉट बी. क्या हुआ? क्या कि बी हुआ ही नहीं, उसमें कार आ गई गोट की जगह. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वॉज कि गोट आए ना, तो उसके लिए हम नॉट क्यों मतलब कैलकुलेट कर. मेरे को ये नहीं पता चल रहा. ओके. मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम. कैन यू एक्सप्लेन मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम? हम स्विच कर रहे हैं चैट जीपीटी से यूट्यूब और यूट्यूब से चैट जीपीटी. दिख रहा है इसमें स्ट्रीम पे. यू आर ऑन अ गेम. सो ये तो
मेरे को पता है, ये पता है मेरे को, कैलकुलेशन बता साले, कब से वो भूमिका ही बांधे जा रहा है कि यू आर ऑन अ गेम स्विच, switching doubles your chances. Stay. Why? Intuitive explanation. When you first choose a door, you have a 1 by 3 chance of picking a car, 2 by 3 chance of picking a goat. Nothing tricky so far. Monty removes a goat. Monty is the host name. Okay. This is the critical one. Monty knows where the car is and always opens a door with her goat. So this is उसके पीछे की मेन चीज़ की Monty knows where the car is and always opens a door with a goat. So he never randomly opens a door. This means if your first pick was wrong, 2 by 3 probability, the remaining closed door must have the car. If your first pick was right, 1 by 3 probability, switching loses. Correct. If your first pick was wrong, which is 2 by 3 probability, मतलब कि पिक में कार नहीं थी, उसकी probability 2 by 3 है. So switch wins in the 2 by 3 case, stay only wins in the 1 by 3 case. Stay only wins. इससे पूछो व्हाट इफ वी डोंट नो What if दैट आवर पिक इज रॉन्ग और राइट. कौन से पिक? वो तो नहीं पता ना हमको, वो तो वैसे भी नहीं पता. मतलब समझ में आ गया मेरे को. If your first pick was wrong, the remaining closed door must have the car because Monty knows where the car is. ठीक है, तो वो हमेशा गोट को ओपन करेगा. बट एट द स्टार्ट देयर वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3. एट स्टार्ट तो कुछ नहीं पता, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है. जब पिक किया एट दैट वेरी मोमेंट 1/3 प्रोबेबिलिटी थी. नाउ आफ्टर मॉन्टी ने ओपन किया डोर, नाउ देयर आर 2 केसेस. मतलब एक में कार है और एक में नहीं है. तो द क्वेश्चन इज कि शुड वी स्विच और नॉट. तो अब स्विच विंस इन द 2/3 केस, क्योंकि अब फेवरेबल आउटकम अगर हम देखें तो एक तो निकल गया क्योंकि वन गॉट एलिमिनेटेड ना. उसने रिवील कर दिया कि उसमें गोट है. तो दैट मीन्स कि जो है, और अबे 2/3 प्रोबेबिलिटी कैसे आ गई फिर पिक. अरे ये वो है, सॉरी. दिस मीन्स इफ योर पिक वाज रॉन्ग एट स्टार्ट, बुड़बक. इसका स्टेप 2 बुड़बक जैसा है. दिस मीन्स कि इफ़ योर पिक वाज रॉन्ग मीन एट स्टार्ट, उस अगर वो पिक रॉन्ग होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है. करेक्ट. इफ़ योर पिक वाज राइट, पिक राइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. तो स्विचिंग, अबे मेरे को लगता है ये लेट नाइट होगी और हम कब से चूतिया बाहर जा रहे हैं, इसलिए मेरे को लगता है समझ में नहीं आ रहा. अरे ये गड़बड़ कर दिया चैट जीपीटी. ये नहीं समझा पाया ठीक से. पिक कार. अब इसको पता ही नहीं है कि हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग सही चूज किया या फिर गलत. किसको नहीं पता है?
बेसिकली। अरे नहीं, वो तो है, गिवन ही है ना कि हमको नहीं पता है। वो कहाँ कह रहा है कि पता है हमको? Anika, this means if your pick was wrong, the remaining closed door must have the car. If your first pick was right, switching loses. हाँ, तो अगर जब हमने डिसाइड किया तब वो हमारी पिक सही थी, तब स्विचिंग लूजेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 थी तब की, ठीक है, कि हमने सही चूज़ किया। तो अगर स्विच करते, अब मेरे को, ओके, अब मेरे को समझ में आ गया। हाँ, तो ये उस टाइम पे देखो कि स्विचिंग, इससे पूछो ना whether we should switch or not. वी शुड स्विच। हाँ, स्विच विंस इन द 2/3 केस। देखो, जब मैंने, लेट्स से ABC डोर है, तो ए मैंने पिक कर लिया, ठीक है, तो ना उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कार हो, 1/3 प्रोबेबिलिटी है उसकी कि उसमें कार होगी। एंड फॉर, अगर इसको आइसोलेट करें हम ए को, ए गेट को, तो रेस्ट ऑफ द गेट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें कार होगी? 1/2. नहीं, मेरा मतलब है कि अबे मैं समझाना, हाँ, बताओ. इसकी 1/3 प्रोबेबिलिटी है, तो 2/3 चांसेस उसमें है ना, जो अदर 2 गेट्स है उसमें, हाँ, वो तो उसमें सही है. उसमें तो 2/3 है ना, उन दोनों की। दोनों में से किसी एक में तो होगा ही. हाँ, सही है. हाँ, तो क्योंकि हमारे पास दो में से, दो में से एक में होगा तो 2/3 है, और लेकिन एक गेट है तो उसमें 1/3 है, हाँ, क्योंकि उसने रिवील कर दिया नाउ, तो हमारी यहाँ पे 1/3 ही रही। हाँ. स्व- और वहाँ पे एक पक्का है, ठीक है. हाँ, स्विच, देखो हमारा ये 1/3 रहा ही रहा, ठीक है. देखो दो चॉइस है, हम्म, जो दूसरी चॉइस है ना, उसमें 2/3 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसमें दो डोर है, ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें दो डोर है, अगर कार के चांस हमारे पास आने की 1/3 ही है, लेकिन उसने जब खोला तब भी वो 2/3 ही पॉसिबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी, हाँ. तो हम 2/3 पे बैट करेंगे, क्योंकि वो दो डोर थे, इनिशियली भी दो डोर थे वो, हमारी पास इतनी इंफॉर्मेशन है। हम इस पे क्यों बैट करेंगे कि 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि इसमें ही कार होगी, उसकी तो एक ही प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 3। ओके, तो मतलब हम लोग को स्विच नहीं करना चाहिए. नहीं नहीं, स्विच करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो स्विच नहीं किया उसका मतलब कि हम उसी चॉइस पे रहे, तो मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी है। देखो, ट्री ट्री से नहीं. समझाता है, दिस इज ए एंड दिस इज B and C, B and C ही लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो, अब ए मैंने पिक कर लिया, हाँ. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और इन, क्योंकि हम इन दोनों को साथ में ले रहे हैं, क्योंकि स्विच और नॉन स्विच ये हुई, तो इन दोनों को साथ में लेंगे हम 2/3, हम्म, क्योंकि अगर इसमें नहीं हुई तो इन दो, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है इन दो डोर्स की, ठीक है।
अब जब वो रिवील करता है, ठीक है, तो उसमें से हम ये वाला पलड़ा लेंगे ना, ये वाला थोड़ी लेंगे। अगर सेम चॉइस के साथ रहना मतलब 1/3, ये वाला पलड़ा लेना मतलब 2/3, तो विच इज़ ग्रेटर? 2/3 इज़ ग्रेटर। अच्छा मान लो कि वो बोलता है कि सी सी निकाला, ठीक है, सी कोई निकाल दिया, तब फिर क्या करेंगे आप? सी, बी की जगह सी को निकाला ना, मतलब किसी एक को निकाल दिया, बी या सी में से कोई एक, फिर वो एक ही निकाल सकता है ना, मतलब बी या तो बी को निकालेगा या तो सी को निकालेगा। हाँ, तो ए से बी को निकाल दिया, फिर स्टिल ये सेम ही रहा ना। देखो बी को निकाल दिया, तो हाँ, स्विच करेंगे तो 2/3 हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम ये दोनों की कंबाइन ले रहे हैं ना एट दिस मोमेंट। स्विचिंग में हमारा फ़ायदा है क्योंकि हम दोनों की कंबाइन मिल रही है, क्योंकि एक गेट तो वो निकाल दे रहा है। तो स्विचिंग मीन्स कि हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पे बैट कर रहे हैं। ओके ओके। अब मेरे को समझ में आया, बट कैलकुलेशन स्टिल। अनक्लियर है ना कैलकुलेशन। हाँ, क्वेश्चंस करोगे ना, फिर हो जाएगा। हाँ, मेरे को लगता है मेरे को इतना टाइम नहीं देना चाहिए। win by इसमें भी switching, टाइम लगेगा। win by staying 1/3। अब एक वे उसको कहना था कि 2 by conditional probability equation। हम्म, ठीक है। Conditional probability, door 1 the host opens, door 3 and so on, so forth. Car is behind door I। अबे, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अबे कह रहा हूँ, अबे टेक ए event A and event B। Event A is equal to car is behind your original chosen door. Event B, host opens a specific other door showing a goat. Now we want to compute probability of A given that B has happened, given the host has opened a door, probability the other unopened door has car. Step 1, base probability. Probability of A is 1/3. Probability of AC is 2/3. Even that car is not in your chosen door. Host behavior in each scenario. Both other doors have codes. Host chooses randomly between them. Your door is the car. 1/2. Event A falls cars. यहाँ पे टोटल यूज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज टू मच कॉम्प्लिकेशन फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो मेरे को समझ में आ गया कि
1/3 इंटू 1/2 कैसे है ऊपर? टोटल प्रोबेबिलिटी explain total probability. Why we do that? It is a rule that tells you how to compute a of an event by breaking it into smaller cases. Probability of B is sigma I, probability of A I, probability of B A I. This was again, ये भूल गया, ये सिंबल किसके लिए था? Probability B of of B when A despite happened. given A has happened. हाँ, all possible cases or partitions. A के सारे cases और partitions the event you want, the probability of each case happening, probability of B happening inside that case, then add all the possibilities. If something can happen in many different ways, the total is the sum of probabilities of each way. Why we do this? Because many events do not happen directly when through different paths, and each path has a different probability. A test can be passed by studying or by guessing. A rain can, okay. The reason total probability exists. Case 1 event, okay. Event B, host opens a specific code door. Case 1, car behind your door. Case 2, car behind door 2. Case 3, car behind door 3. So, host opens a specific code door means you must use total probability because the host section depends on where the actual car is. So, probability of A. अब यार ये symbol B despite happening A, B given that A has happened, probability of A2. What is A2 now यहाँ पे? Case 2. दिया हुआ है. हाँ. ये specify क्यों नहीं कर सकता? Case 2 ना? I think so. हाँ. Probability of A. think I should get some rest now. You can go. So, good luck. All the best. तब Okay. तक के लिए bye bye. कोई नहीं, thank you for the help. ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन नहीं बहुत help की. कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ. Okay, bye. See you. मेरे को लगता है इतना डीप क्वेश्चन तो आने भी नहीं वाले हैं, बट ठीक है, क्यूरियोसिटी भी कोई एक बला का नाम होता है. एंड अगर अमन ना चाहता तो मैं भूल जाता कि मेरा 2% चार्ज है. अभी चार्ज में लगाया मैंने, 1% शो कर रहा है. अगर अमन ना जाता तो मेरे को नोटिस नहीं होता और स्ट्रीम बंद हो जाती. हाय मोहित. हाय आफ्टर मतलब
आफ्टर कि वो चला गया, सीधे क्वेश्चन ही करने चाहिए था. इट्स अ मिथ कि यू कैन लर्न सो मच क्विकली, बिकॉज डाउट नाम की भी कोई चीज़ होती है. एंड दिस हैपन्स, आई फील कि यू कैन ग्रेस्प एवरीथिंग क्विकली, but there is flaws in explaining. I'm not talking about Aman. I'm talking about the language, the way it communicates, the books. uh, Books are not flawful, but the thing is कि your mind behaves differently, and books are written in a certain way. So if there is a one way transmission from certain source to your brain, the way your brain understands it, and there's no room left for confusion, then you can understand it better. Confusion arrives from maybe a way of communicating idea to the another person. The idea is not the problem. He can understand the idea, but he might think it as an another idea. That's why when things get clear that this is not the idea, this is not the idea, this is not the idea. Oh, now you're talking that way. Okay, that's the idea. Perfect. If events A1, A2 form partition of sample space. I didn't know probability had this much things. Permutation, combination plus probability. But I think all of this is, if not for, even if not for exams, these are must learns if you want to build something for even for general understanding. Classic probability models, biased versus unbiased. At least at most conditions consecutive sum of dice, at least 1 6 conditional events. Okay. Exception optional but sometimes seen. At least one trick. At least one is equal to 1 minus p none. Now if it would be better if they can specify what do they mean by p none. Equal probability confusion. Outcomes are not equally likely. We cannot use simple fraction formula. Hidden dependency. Whenever objects are removed, selected sequentially, events are dependent exactly. K. Fun involves combination plus independence. When sample space is very large, use
This was not related to exams, but I had fun learning. Let's see. PQRS are four towns. One can travel between P and Q along three direct paths. Between Q and us along four direct paths. First question, it seems that it's very lengthy. The number of ways of distributing 20 identical balloons among four children that each child gets. You have to find that number. Okay, each child gets some balloons, but no child gets an odd number of balloons. You have to give everyone number of ways of distributing. Okay. How do we do this by probability? एक्चुअली मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे को तो इसमें तो गैस गेम ही खेलने को समझ में आ रहा है कि ये करेंगे. 20 बलून्स है, 4 चाइल्ड्स है, 1 2 ये ब्लॉक बना देते हैं. सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए. नंबर शुड बी ऑड. तो मिनिमम दे कैन गेट इज 2. ट्वेंटी को इफ वी से 2 into 5 into 2, least they can get is 2. So if I make 3 blocks to 2, the one block will get 4, 6 and 14. I have to find how many numbers of ways you can give them. Now 2, if I keep 2 blocks to 2 and divide between these 8 8, I can give 8 8 balloons. Now here as well, I think there will be some way how to calculate this. 6 10 is possibility. 2 2, I think there are many possibilities because इतना सारा कैलकुलेट थोड़ी करूँगा मैं. There has to be some way. Because कि
जो अगर दूसरा 2 है उसको भी ABCD नाम दे इन ब्लॉक्स को, तो एक बार वो C2 बनेगा, C को 2 मिलेंगे और D को 2 मिलेंगे, और जब 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 6 और 10 में मिल रहा है तब C और D को भी इंटरचेंज करके दैट्स ऑल्सो अ न्यू पॉसिबिलिटी. So it's too much to calculate. I think there will be something. Six, 10, 2, 8, 8. ओके, और यहाँ पे आके अटक जाता है या फिर 4. वैसे ये कर तो सकते हैं हम कैलकुलेशन, बट इट विल बी टू मच लेंथी. इतने में तो टाइम ही निकल जाएगा. आई एम बैक. वेलकम. सोना नहीं था क्या आप तेरे को? स्ट्रीम करके हटा हो जस्ट. यू ऑल्सो स्ट्रीम क्या? आई डेंट नो. Let me check your YouTube channel. भोसड़ी क्या? वैसे इतने में कुछ दिख नहीं रहा. चेस ही कर लेता तू. मत देखो. ये सच में आपको बता रहा हूँ बस. हाँ, नहीं दिख रहा. बट चेस यू कैन स्ट्रीम. माइनक्राफ्ट बहुत छोटा हो जाता है. अबे इसको कॉपी कैसे करूँ? कॉपी नहीं हो रहा. सालों ने जानबूझ के कॉपी ना हो ऐसा किया है. ये मेरा फेस नहीं है. कौन सा? Fucking hell. The number of ways of distributing 20 balloons identical balloons among 4 children such that they should get some but not in odd numbers. What are possible
ways number, total possible ways. So how uh, to calculate, and is this question from PNC? Let me see. ये मेरे भाई का फेस है, उसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ। बच्चों को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं हमें। क्या क्या लिखते हो? China, good, okay, fine. Question, number of ways to distribute. Okay, step 1, each x is given right x and 2 I. अबे इतना ज़्यादा क्या है कैलकुलेशन? Because this is the classic integer partition with constraints problem solved using change of variables, parity constraints, stars and bars combinations. Let the 4 children get balloons x1 x2 x3 x4. आप माइनक्राफ्ट खेलते हो? नहीं, मैं नहीं खेलता. Each xi is given, right xi is equal to 2yi. Each child gets some 2yi. Y is balloons, so because it should be even, so 2yi. Okay, each child gets some balloon. It will be greater than 1 or equal to 1. It will not be equal to 1. It will be 2 only if we are offering him some like least balloons. Each child gets balloon in even numbers. Balloons identical. This is a combination with constraints problem. Yes, this is a PN. Okay. Total balloons is equal to 20. Substitute 2yi. 2y1 plus, okay, y1 plus y2 plus y3 plus y4 is equal to 10. करो कभी, काफ़ी अच्छी गेम है चेस की तरह. ओके, आई ट्राई. हम साथ में खेलेंगे. You can play on Mac. Can you play on Mac? To substitute x is equal to 2yi. Okay, fine, is equal to 10. Now with yi will be greater than equal to 1. Standard bars and bars with positive integers. Number the solutions to y1 plus y2 plus y3 plus y4 is equal to 10. Formula for positive solutions to is equal to n minus 1 k minus 1. N is equal to 10, k is equal to 4. What the fuck is... K is total number, so that's why it's 4. I hate when it doesn't give explanation, as if I am omnipotent. I'm not phase. 10 minus 1, 4 minus 1, 9, 3. 9 into 8 into 7, 3 into 2 into 1. This is basically okay. N is equal to 10, correct. K is equal to 4. Till now I understand. Vase is equal to 10 minus 1, 4 minus 1. Y 9 3. 9 3 यहाँ पे is equal to 3 into 2 into 1, 9 into 8 into 7.
can you also explain along the way? I don't know about those concepts. Why the way they are? Distribute 20 identical balloons. Get some balloons. Now we cannot. अच्छा वो हमने ये नहीं किया कैलकुलेट 84 बार कैलकुलेट करना पड़ता है चलो पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स ये समझ गया मैं व्हाई डू वी रीराइट इवन प्रॉब्लम्स इवन नंबर्स 2 into so xi is equal to 2 yi we write this it's simply because any even number is 2 times some whole number since every child must get at least 2 balloons yi should be greater than equal to okay it can be equal to 1 because yi is multiple of 2 child 1 gets 2 yi so the new value is child 2 gets 2 y1 y2 y3 y4 because we are not choosing which balloons they are identical original x1 plus 22 to 20 7 chunks bye bye मैं चलता हूँ सोने सो जाओ मैं भी आधे घंटे में सोने जा रहा हूँ We imagine chocolate as stars. Example kid 1 gets 2 3 formula is n minus 1 k minus 1 total 4 bars is equal to 3 cuts bars somewhere among the 9 gaps between 10 stars there are 9 gaps between them choosing which 3 gaps will hold bars gives different distributions choosing which 3 gaps will hold bars gives different distributions so number of is equal to choose 3 bars from 9 okay understanding okay I'm getting little bit 9 positions so 1 bar 2 bar and 3 bar 4 bars is equal to 3 cuts 3 bars you place 3 bars somewhere among the 9 gaps there are 9 gaps in between them 10 stars 9 gaps so you cannot there are not possibly there are not 10 gaps so only 9 choosing which 3 gaps will hold 6 computed 8 7
First, why three cuts in four parts? You can have three cuts, three, four parts, also three cuts bars. One cut, two cut, three cut. So four parts is three cut. But why 9, 8, 7 and 3, 2, 1? That logic didn't just... Okay. C93 mean choose 3 positions out of 9. You want... I'm getting interested, like, I like this. Should have done all of this earlier. Now I'll definitely learn about this, now about maths, even after exam. Choose 3 positions out of 9. Think of 9 positions like this. You want to select 3 of these to put bars in. Count all order sections without caring that order doesn't. You choose 3 options, positions. Imagine choosing them one by one. Okay. First choice, you have 9 options. Second choice, you have 8 options remain. Third choice, now 7 options remain. So total order selection 9 is. Order does not matter. Choosing position 2, 5, 7, 5 to 7 are actually the same selection, not different ones. But when we counted all this as different, even though they shouldn't be. So we divide by 3 to remove duplicates. Putting it all together. You have 9 options. Second choice, you have 8 options. Third choice, you have 7 options. फर्स्ट चॉइस 9 ये तो समझ गया मैं. 9 options, 8 options, 7 options remain. But how are they getting duplicated? Or because order does not matter 2, 5, 7, but those are all still 3 options now, so it'll get counted as 7. Okay, yes, 3 are is equal to 6 arrangements are actually the same selection, not different ones. C and R in another way. Combination, permutation and combination.
The arithmetic mean of all distinct numbers that can be obtained by rearranging itself is. I think there are permutation combination questions here. These are all combination questions. Bayes theorem. Let E1, E2, E3 be mutually exclusive and collectively exhaustive events, each with probability P1, P2, P3 of occurring. Let P be another event of non-zero. Be mutually exclusive and collectively exhaustive. With a probability P1, P2, P3 of occurring. Let B be another event of non-zero probability such that probability of B given E1 is probability of B given E1 is Q1, B given. I think I need to understand the whole thing, then only I can understand. Such that probability of B given E1 is Q1. These are all permutation combination questions. Fine. I think we are ending the stream. But after this I can solve easily my questions given in R.S. Agarwal of probability. I think I should have started from here only. I should have done problems of R.S. Agarwal. Where is probability? Here actually there are quite easy problems maybe, and there's not concept and theory is not that deep. I think yes, quite easy problems, very easy, and this I can solve easily. खाली फुकटी मैं गया हूँ उस पे. Yeah, this much I can do. There's no issue on this. But now I need to learn about permutation combination. It's interesting, honestly. Permutation combination, set theory, all of this.
So I think this has basic things only. Here, one extra thing that they have given other than basics is probability of A combine B, which is probability of A plus probability of B minus uh, probability of intersection. This is quite easy. We just learned this. I think मेरे को लगता है कि I should do this maths thing offline, and when I know all the theory then only come and maybe teach you guys. Be curious about other more powerful things or related to maths or facts or trivia, not learning over here. I thought it would be quick. It can be quick, but it's just that we deep dived into a totally different concept, which can be a full fucking subject. We also learn about many things. Not was good. Now, if I learn all of the combination stuff, permutation, combination, and whatever comes with probability, then I can do. So this was it for stream. See you, bye bye, tata, goodbye, good night, sabah khair, Kareem Lala, Janat Zubair, और कोहली century. Let's fucking go.